Hi, good morning. Good morning, You ma'am. can continue Good saying morning, about ma'am. who's Good dressed up. morning, ma'am. Of course, I can see Raman dressed up in green here. Good morning. And even Priya, Priya in orange. Oh my Anuradha in green and white. Yeah, green and white. so beautiful. Anuradha, you are Yeah. looking too And then even Anu. Thank you. Happy How Independence nice, Day. early in the morning celebrating the Independence Day. So this is 76th Independence Day, and all thanks to all the great freedom fighters. There were so many who are known जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, of course सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, है ना, but बहुत सारे ऐसे uncrowned heroes हैं who have lost their lives fighting for the country. उनके नाम हमको नहीं पता है, but you know, like wherever they are right now, wherever their souls have taken rebirth, you know. So much blessings to all of them for making our country such that we can live like this. कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, ये सब उनकी वजह से है, क्योंकि तब तो बहुत अलग तरह की जिंदगी होती थी. So that is so much to do with you know, all of them who have fought so bravely and put up a brave front. So yeah. तो सारी हमारी ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ डायरेक्टेड है, फोकस्ड है, उन्हीं की तरफ एनर्जाइज्ड है. तो जहाँ पे भी हो उनकी जिंदगी अब बहुत अच्छी होगी और उनको अपनी जिंदगी में बहुत फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमको इतनी बड़ी फ्रीडम दी है. So women especially were just not, I mean, women were slaves that time. So even men were slaves. मतलब हॉस्पिटल में भी जाके इंडियंस नहीं दिखा सकते थे ना, हॉस्पिटल में जाके भी नहीं, उनको राइट नहीं था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर से इलाज कराने जाएं. मतलब टू दैट एक्सटेंट हम लोग स्लेव्स थे. So but then to what it is now, you know, jannat ho gaya. I think we are living in the golden era. So yeah, all thanks to them, and so deep gratitude to all the freedom fighters and, you know, everybody who fought for the country, not caring about their wives and children and all of them. So yeah. So true. So Deepti, can you hear me, Deepti? हाँ जी बिल्कुल. आप अभी वो ड्रेस और उसकी बात कर रहे थे ना, फ्रीडम वाली. हाँ. मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैंने कभी नहीं किसी को, ना आपको भी नहीं बताई. मैं कनाडा में कितने सालों से रह रही थी, बट मैं थोड़ा सा किडिश भी साउंड करेगा, बट यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने फर्स्ट शॉर्ट स्कर्ट दीप्ति के कहने पे डाली थी. व्हेन शी एनकरेज मी कि यू शुड ड्रेस द वे यू वांट टू बी, यू नो. तो मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 2022 में 1 जनवरी को वैसे ड्रेसअप हुआ था, द वे आई वांटेड टू बी. और आज मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि इसने 1 साल पहले ही ऐसे. अदरवाइज आई ऑलवेज इन लाइक माय पैंट्स और सूट इवन इन कनाडा. सो मैं वो पिक्चर भी जरूर शेयर करूंगी जो मैंने इसको याद नहीं होगा, बट मुझे इसलिए याद है बिकॉज इसने ही मुझे एनकरेज किया था. तो वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी जब मैंने वो पहली बार डाली थी. या सो तो आपको तो फ्रीडम थी लेकिन ना पहनने की. हाँ, आप ये देखो ना कि फ्रीडम थी, बट वो आई डोंट नो, वो करेज नहीं था ना, क्योंकि फ्रीडम के साथ करेज बहुत जरूरी है. करेज भी that बहुत was जरूरी है mental ना. entanglement, वो था. But she got the freedom for that from that mental entanglement also. Yeah. हाँ, that तो mental block जो था. हाँ, मतलब इट्स लाइक कि कभी किया नहीं, तो वो भी एक चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी, मतलब टू ड्रेस अप लाइक दैट. अब तो खैर मैं वैसे ही होती हूँ. हाँ, अब तो कैसे भी होती है अब. हाँ, तो फ्रीडम का मतलब यही है ना, फ्रीडम इज नॉट जस्ट फ्रीडम, ऑफ कोर्स फ्रीली, फ्रीडम फ्रॉम मेंटल ब्लॉक, फ्रीडम फ्रॉम ग्रजेस, फ्रीडम फ्रॉम, यू नो, दैट जो स्पेंडिंग मनी का फ्रीडम होना चाहिए, कि आप इतना पैसा कमा लो कि आपको सोचना नहीं पड़े कि मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. फ्रीडम टू मेक डिसीजंस. So that is what independence did. Independence from so many things, you know. So that is what independence to live the life the way, independence to do the courses that we want to do, independence to eat what we want. ये नहीं सोच के कि you know, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. मतलब इतनी बढ़िया हमारी हेल्थ हो जाए कि हमारे पास पूरी फ्रीडम है to choose that what we want to eat, you know, like that way. तो हर चीज से फ्रीडम होनी चाहिए, कि बहुत ज्यादा मतलब बंधन में हम रहे ही नहीं बिल्कुल भी.
सो आज का चैप्टर बहुत आखिर में आया है, डे 26, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। इसका मतलब है कि आज के बाद से हम किसी का ब्लेम गेम नहीं करेंगे, नॉट थ्रोइंग थिंग्स एट अदर्स। उसकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी है, उसने ऐसे कर दिया तो ऐसा हो गया, उसने मुझे इतना परेशान किया कि मेरी जिंदगी आज ऐसी हो गई, मेरा स्ट्रेस सारा उसकी वजह से है। So this is what the chapter is all about, that going forward again, मतलब अपने मिस्टेक से भी फ्रीडम, like वो भी नहीं हमारी जिंदगी में किसी और की वजह से नहीं है, उसमें भी हमको अच्छाइयां देखनी है, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज लाइफ वर्ड, इट विल नेवर पुट अस इन अ सूप, मतलब इन अ प्रॉब्लम। सो वो मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि वो तरीका होता है यूनिवर्स को हमको उसमें से कुछ सिखाने का, कि हम सीख जाए तो वो वापस से सिचुएशन नहीं आती है। लेकिन जब तक हम सीखते नहीं है, जब तक हम किसी और को ब्लेम करते रहते हैं ना, तब तक वो सिचुएशन बार 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 हमारे साथ होती है। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। सो यूनिवर्स के कहने का तरीका होता है हमको गलती करा के कि सीख जाओ, सुधर जाओ, तो आगे ये नहीं होगा, तुमको ये अपनी जिंदगी में बदलने की जरूरत है। हमको कौन बताएगा कि हमारा कोई ऐसा बर्ताव है, कोई बिहेवियर है, कोई एटीट्यूड है, या हम कुछ ऐसा करते हैं बार बार रिपीटेडली जो पैटर्न की तरह हमारी जिंदगी में बार बार होता है ना। जैसे लोगों की जॉब छूटती है, पहली जॉब छूटी, फिर उसके बाद सेकेंड जॉब छूटी, फिर से कुछ हो गया, फिर थर्ड जॉब लग रहा था बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो भी छूट जाती है, फिर फोर्थ। इसका मतलब है यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीख जाओ अभी इसमें से क्या है। मे बी कुछ पैटर्न है, कुछ गलती है जो हम बार बार कर रहे हैं, या फिर हमारा गॉसिप का हैबिट है, या कोई ऐसी चीज है, या बहुत कंप्लेसेंट है, टाइम को लेके हम हमेशा लेट केट होते हैं, मतलब हर जगह लेट पहुंचते हैं, तो ऑफिस में सबको नजर में आने लगा है कि दिस पर्सन हैज दिस प्रॉब्लम, तो उसके कारण बहुत बार वार्निंग मिली, उसके बाद जॉब ही चली गई। सो या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं ऐसे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, चलता है एटीट्यूड। ठीक है, सो इट कुड बी लाइक एनीथिंग, कोई भी पैटर्न, कोई रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर जो हमारा है, जो हमको बदलने की जरूरत है। यूनिवर्स हमको बार बार उस सिचुएशन में लाके देंगे जहां पे हमको वो रियलिटी चेक करना पड़ेगा अपने बिहेवियर का। या तो हम करते रहें तो वो प्रॉब्लम आती जाएगी और बड़े रूप में आती जाएगी, या फिर निप इन द बड, मतलब वो बट से ही काट दें हम उसको, उस प्रॉब्लम को, जो हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर है। बट ब्लेम नहीं करना है किसी को। Always remember that cause of every problem, solution, everything is inside us. कुछ भी बाहर नहीं होता है, वो प्रॉब्लम भी हमारे कारण आई थी और उसका सोल्यूशन भी हम भी ला सकते हैं। So that's what this chapter is all about. Magically transform mistakes into blessings. इसकी इमेज हम देख लेते हैं। सो इसमें पूरा अंधेरा है, अंधेरा है मतलब कोई गलती के कारण हम सफर कर रहे हैं, और उसमें से खूब लाइक लाइटनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आ रही है, दैट उसमें भी हम रोशनी लेके आएंगे, उस अंधेरे में रोशनी लेके आना, है ना। जो गुरु का मतलब ये होता है, गु इज अंधेरा, रू इज रोशनी, जो अंधेरे में रोशनी लेके आता है। तो आज का चैप्टर वही है, अंधेरे में रोशनी लेके आना। हाँ जी रामन, प्लीज पढ़िए। Day 26, magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. It's a quote by Oprah Winfrey. She's a media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, the law of attraction,
we will make the we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's 1 consider. second, Raman. We'll just, Yeah. this like slightly becomes a longer chapter. Yeah, so it starts with Oprah Winfrey's quote here, turn your wounds into wisdom. So जो भी जहां पे भी चोटें लगी हुई है ना, उनको उनसे सीखो. मतलब they should make us wiser as a person. That's what she has to say. So कहते हैं कि हर गलती या हर सिचुएशन जो हमारे साथ होती है, सपोज हमारे साथ किसी का बहुत बड़ा मैसिव झगड़ा भी हो गया ना, उसके पीछे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. वो इवेंट से ही कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स हमको, तो हमको वो से सीखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ दैट ब्लेम गेम, ये हो गया वो हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसे कर दिया, वी सल्क अबाउट इट, वी वरी अबाउट इट. हम उसी सिचुएशन में ड्वेल करते रहते हैं, और एक दिन नहीं, बहुत सारे साल. हमको ये भी याद है 15 साल पहले किसी ने हमसे मिसबिहेव किया था, यू नो. सो नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें से क्या चीज निकल सकती है ऐसी जो हम सीखें. तो इसी को हम बोलते हैं ना, विजडम यही होती है लाइफ की, दैट वी हैव लर्नड. इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, चाहे कितनी भी किताबें सिखा देना, लाइफ मेक्स यू लाइक रियली वाइज, यू नो, ऑलवेज. तो इट सेज दैट हर सिंगल मिस्टेक जो हमारी जिंदगी में होती है वो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उसको ये सोचना चाहिए. ठीक है. सो अगर हम सोचे कि इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लाइक छोटी सी भी कोई कोई ऐसी गलती है कि यू नो लाइक किसी से आर्ग्यूमेंट भी हुआ, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो हमें उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए. सो दैट इज हाउ आई हैव आल्सो लर्नड. आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी एंग्री पर्सन अर्लियर. मतलब कोई छोटी सी चीज भी ट्रिगर हो जाती है. माय सिस्टर देयर इन द सेशन, शी नोज आई यूज्ड टू गेट रियली एंग्री at every small thing. Later then with life I learned that, oh come on, like this, it's not even worth it. इतनी छोटी छोटी चीजें, and every person is entitled to express the emotions. हमको हर चीज में ओपिनियन नहीं देना होता, कभी कभी से सुन लेना होता है लोगों की बातें. ठीक है, इस तरह से. एंड ऑफ कोर्स लाइक इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सीखेंगे, हम सब जब कार चलाने हमने सीखा था, तो कहाँ पहली बार में परफेक्ट हुए थे. वी टुक टाइम एंड देन वी बिकेम परफेक्ट, इजंट इट. मतलब पहले 1-2 बार ठोकी भी है इधर उधर शायद, है ना, पता नहीं, कहीं पे जहाँ ब्रेक लगाना चाहिए था वहां पे एक्सेलेटर दब जाता था. तो इस तरह की भी चीजें की है. विद टाइम, विद प्रैक्टिस वी हैव लर्न कि अभी इतना परफेक्टली हमको कार चलाना आता है कि हम किसी भी शहर जा सकते हैं, हाईवे पे चला सकते हैं, किसी छोटे शहर में चला सकते हैं बहुत आराम से. सो ऐसे ही तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट बच्चा भी तो जब साइकिल चलाता है कितनी गलतियां करता है. इसका ये थोड़ी मतलब है कि मुझे तो आ ही नहीं सकता. अगर हम ही सोच ले पहली बार में किया, वो मेरी कार में डेंट लग गया, आज के बाद से मैंने कार नहीं चलाना, मुझे नहीं अच्छे से आती है, मुझे नहीं कार चलाने में कोई वो नहीं है, और अब मुझे नहीं आ सकती. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. सो दैट इज नॉट द वे. सो इट सेज दैट मिस्टेक्स करोगे, गिरोगे, उसी तरीके से सीखोगे जिंदगी में. और यहाँ पे भी वर्ड फ्रीडम आ गया है. ठीक है, कितना सिंक्रोनिसिटी में चलता है हमारा. तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो हम फ्रीडम की इतनी बातें कर रहे हैं. सो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, यू हैव द फ्रीडम टू मेक योर ओन चॉइसेस, एंड दैट मीन्स दैट फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, है ना. सो मिस्टेक्स इसमें लिखा हुआ है बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम पहली बार सीख जाएंगे कोई गलती करके, तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी. और अगर हम नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स उस प्रॉब्लम को बार बार और बड़े और बड़े और बड़े रूप में लेके आते हैं, जिससे कि हम उसको सीख जाएं. सो इसलिए इसमें हमको बताया हुआ है आगे जाके क्या तरीका है इसका. So it says that to learn from the mistake, पहले तो you have to own it. You have to say that yes, the reason is inside me and the solution will also be inside me only. So to learn from a mistake, we first have to own it. हमारी जिंदगी के outer world में कोई भी चीज हम मतलब हमारे बगैर कोई और डिसीजन नहीं ले रहा है. मतलब अगर किसी का ऑफिस में अप्रेजल भी होता है या मतलब इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो वो बॉस इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है. ठीक है, वो यूनिवर्स से ही मिल रहा है.
अगर आपका इंक्रीमेंट 50% होना होता तो वो बॉस की जगह कोई और आ जाएगा वहां पे करने के लिए. So universe changes, makes events, people, circumstances in such a way that you get what you deserve. Okay, so we are actually getting what we deserve, whether it is good and bad. So now is the time to change that. है ना, हम क्यों गंदी चीजें डिजर्व करें या हम क्यों लेस देन परफेक्ट चीजें डिजर्व करें. सो उसका तरीका यही होता है कि अपनी मिस्टेक को ओन करो and move forward. So owning a mistake that yes, I will not blame anyone for anything that's happening. अगर मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग से भी लड़ाई होती है, मुझे जाने का मन नहीं करता है, I will own it. अगर स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं या कुछ होता है या घर में बहुत ज्यादा ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो फिर own it. We are the reason for it. Okay, so इसमें यही लिखा हुआ है, to learn from a mistake we first have to own it, and this is where many people can become undone. मतलब यहाँ पे लोग एक्चुअली गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो ब्लेम गेम में चले जाते हैं, है ना. सो हम इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो पढ़ेंगे. तो इसमें वैसे तो ओवर स्पीडिंग का एग्जाम्पल है कि चलान हो जाता है, बट बाहर की कंट्रीज में चलान होना मतलब वो बिल्कुल ही लाइसेंस चला जाता है, वो बहुत बड़ा ऑफेंस होता है. इस वजह से रोंडा बर्न ने वो एग्जाम्पल दिया. हमारी कंट्री में बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, दूसरा लाइसेंस बन जाता है बहुत आराम से. हाँ जी. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write down your list in a gratitude journal
or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Point number one. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number two, I'm grateful to the police because I am honest with myself. I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without being caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing in my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26, magically transform mistakes into blessings. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, choose one mistake you made in your life. Number three, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number four, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number five, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Raman, for reading so beautifully. Thank you. So Thank this basically chapter is हमारी लाइफ को आगे से आसान करने के लिए, बिकॉज पूरे टाइम तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, तुम्हारी वजह से ये होता है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े गलती करते हैं। आई मीन इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि गुस्से में हमारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं कि वो रिश्ता हम हमेशा खराब हो जाता है, हमेशा के लिए खराब हो जाता है हमारा। कई बार ऐसे होता है, ठीक है। सो पता ही नहीं होता है, जबकि हम दिल से बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन गुस्से में हमको इतना गुस्सा आता है, रेज जैसे हो जाती है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं विच आर नॉट गुड, विच स्टेज विद द अदर पर्सन थ्रू आउट, है ना। मतलब गुस्से में ऐसी चीजें बोल देना, वो हमेशा, मतलब वेन एवर द कपल्स फाइट ऑल्सो बिल्कुल ही डिवोर्स की बात कर लेते हैं वो, है ना। सो
इसका मतलब है सो चिल, मतलब काम, बिकॉज देयर इज समथिंग वी नीड टू चेंज इन आवर हार्ट। अगर वो वाली कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इतनी ज्यादा हो रही है और बार बार हो रही है और फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं उससे, तो फिर तो वो और बड़े रूप में आती जाएगी, इट विल नेवर एंड। सो दिस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो सकता है एक दूसरा केस सिनेरियो जो इसमें भी मेंशन्ड है इसकी, हम कभी सस्ती चीजों के लिए सेटल हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि चलो ये सस्ता मिल रहा है ये वाला, और जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदनी थी, अब आपको पता नहीं था, आपको किसी ने बोला कि अरे ये वाली वॉशिंग मशीन ले लो, मे बी वो सेकेंड हैंड थी, मे बी वो मतलब कोई वैसा आपने कभी सुना नहीं था उस कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन थी, आपको लग रहा है कि देखो ये 10,000 रुपए चीप मिल रही है, इकोनॉमिक है, इसको ले लो। ठीक है, पता लगा वो 1 हफ्ते चली और आपके जो 15,000 में जिसमें आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी वो भी गए, बिकॉज वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। अब आपको 15 + 25 और ज्यादा फिर से स्पेंड करना पड़ेगा एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। तो कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं कि हम सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं और बाद में हमको रियलाइज होता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हम करते रहते हैं, तो इसमें ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सोल्यूशन हमारी लाइफ के अंदर है, उससे हम सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे आगे कि ऐसे सस्ते के चक्कर में नहीं भागना है। अगर गुस्से में कुछ बोल देते हो तो ऐसे नहीं करना है। बार बार अगर चालान होते हैं तो देखो, आप गलती तो कहीं ना कहीं है, गाड़ी में बार बार डेंट लगते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी अवेयर हो कि नहीं कार चला रहे हो। ठीक है, बार बार चोटें लग रही है, गिर रहे हो, कभी बाइक से गिर जाते हो, कभी साइकिल से गिर जाते हो, सो इसका मतलब है थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड रहता है रोड पे। तो कहीं ना कहीं हर चीज का रीजन हमारे अंदर होता है। हमको उसमें से 2 चीजें देखनी है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक। जैसे इसमें चालान का बताया हुआ है कि ओवर स्पीडिंग के कारण ड्राइवर ने चालान कर दिया, अब उसकी टेंडेंसी थी बार बार, अब यूनिवर्स कह रहा है कि देखो गाड़ी ठीक से चलाओ, है ना, बिकॉज यूनिवर्स कैन सी आवर डेस्टिनेशन, राइट। सो वो गलतियां बार बार, ताकि वो टेंडेंसी हमारी चेंज हो। अगर हमारी टेंडेंसी है, बिकॉज कुछ कुछ चीजें करने की टेंडेंसी है, उल्टा सीधा बोलने की टेंडेंसी है, बुरा मान के सल्क करने की टेंडेंसी होती है, कई बार गॉसिपिंग की टेंडेंसी होती है, तो ये टेंडेंसीज हमारे अंदर हैं, इनको चेंज करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ बेटर पर्सन। सो इन दिस, दैट्स व्हाट आई सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द मैजिक बुक इज दैट डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत मतलब बहुत ग्रेटली चेंज होती है इन अ वेरी बिग वे, बट एट द सेम टाइम जिस तरह के हम इंसान पहले थे उससे अब जो हम जिस तरह के ह्यूमन बीइंग है, हम में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। So it is not just giving us material things, it gives us material things, बड़ा घर और बहुत अच्छी जगह पे घर, और आपकी मनचाही गाड़ी, आपका the amount of money that you always wanted to receive, आपका ट्रैवल सब मिल जाता है इसमें। बट वो कहते हैं ना, ठोक पीट के हमको ठीक कर देते हैं, ठीक करने के बाद हमको वो मिलता है। सो दैट मीन्स दैट जब हमारे लाइफ से जो सारे कांटे चुभे हुए हैं ना नेगेटिविटी के, वो सब निकल जाते हैं ना, और वो निकलवाते हैं, हमसे ही निकलवाती है ये बुक, हम ही अपने कांटे खुद निकालते हैं सारे। कई कई तो बहुत दुख दर्द के साथ निकलते हैं, कल वाला चैप्टर होगा वैसा। ठीक है, द मैजिक मिरर। सो कई कई कांटे निकालने में बड़ा दुख होता है, लेकिन ठीक है, रोना धोना होता है, फिर से पास्ट में जाते हैं, but then we become a beautiful person, while at the same time we also start living a dream life. This is the best part about it. So yeah, so आज की practices में यही है, सुबह count my blessings. So we will actually we write, if you have not written you can write them now. 10 blessings लिखनी होती है। I'm so happy and grateful that this because this, I'm so happy and grateful for this because this. So because हर बार में लिखना, जैसे अगर लिखोगे I'm very grateful that I get nice nourishing tasty food every day because it keeps me alive and gives me strength and stamina and makes my body cells, इस तरह से। तो because, so इस तरह 10 लिख के उनको रीड करना, और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना। और आज की जो प्रैक्टिस है उसमें चूज 1 मिस्टेक जो हमने ऐसी जिंदगी में की है। सपोज आपकी किसी से झगड़ा हो गया क्योंकि आपने उसको कुछ ऐसे बोल दिया गुस्से में, इट कुड बी लाइक दैट, या जो भी है। सो वो सिचुएशन हमको चूज करनी है, 1 मिस्टेक जो हमारी जिंदगी में हुई, पहले उसको ओन करना है कि वो हमारे कारण थी, हमारी कोई ऐसी टेंडेंसी थी इसलिए ऐसा हुआ हमारे साथ में, और उसमें से 10 ब्लेसिंग्स हमको निकालनी है।
ठीक है। और उसमें से ये लिखना है दैट व्हाट डिड आई लर्न, क्या मैंने सीखा उस गलती से कि उस सिचुएशन की वजह से मैं बेटर एज अ पर्सन हो गई हूँ, मुझ में मेरा हार्ट इतना बड़ा हो गया है, मैं टॉलरेंट हो गई हूँ, अब उसकी वजह से बाकी के सारे रिश्ते मेरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं क्योंकि अब मुझे गुस्सा कम आता है। और उस सिचुएशन से मैंने ये सीखा कि जब आप कितने भी गुस्से में हो आपको हमेशा अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को अच्छे रखने चाहिए। उससे मैंने ये सीखा कि मेरी लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी नाइस, आई शुड नॉट डिटीरियोरेट माय लैंग्वेज जब मुझे गुस्सा आता है या जो भी है। कि उस सिचुएशन से मैंने ये सीखा कि मुझे कैसे दूसरे का भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उसके देखने का नजरिया वो था। सही और गलत तो दुनिया में कुछ होता नहीं है बाय द वे, ठीक है। सो हर इंसान अपना जो एक्शन लेता है वो उसके लिए बहुत कन्विक्शन के साथ, उसके लिए वो सही है, हमारे लिए वो गलत है, बट हम उसके लिए गलत है। तो इसीलिए मैंने ये सीखा कि मैं सही और गलत लाइक आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स हार्ट आल्सो। सो इस तरह से हमको 10 उसमें से ब्लेसिंग्स निकालनी है। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, होल्ड योर मैजिक रॉक इन योर हैंड, थिंक थ्रू द डे and think of all the beautiful things that happen and choose the best one and sleep with that and usko thank you बोल के सो जाओ। So this is about the chapter. Now we'll go to the other book, Power of the Subconscious Mind का हमारा बस पॉइंटर्स बचे हैं, उसके बाद वो किताब खत्म हो जाएगी, फिर हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन शुरू कर देंगे आज, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। These are profitable pointers। ये जो हम एंटी एजिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ टू लुक एंड फील यंग फॉर एवर, ये उसके रैप अप किया है पॉइंटर्स के साथ में। हाँ जी मीतू। Profitable pointers. Point number 1: patience, kindness, love, goodwill, joy, happiness, wisdom, and understanding are qualities which never grow old. Cultivate them and express them, and remain young in mind and body. Point number 2: some research physicians say that the neurotic fear of the effect of time may well be the cause of premature aging. Point number 3: age is not the flight of years, it is the dawn of wisdom in the mind of man. Point number 4: the most productive years of your life can be from 65 to 95. Point number 5: welcome the advancing years. It means you are moving higher on the paths of life, which has no end. Point number 6: God is life, and that is your life now. Life is self renewing, eternal, and indestructible, and is the reality of all men. You live forever because your life is God's life. Point number 7: evidence of survival after death is overwhelming. Study proceedings of the Psychical Research Society of Great Britain and America in your library. Outstanding scientists have the work on the scientific research for over 75 years. Point number 8: you cannot see your mind, but you know you have a mind. You cannot see spirit, but you know that the spirit of the game, the spirit of the artist, the spirit of the musician, and the spirit of the speaker is real. Likewise, the spirit of goodness, truth, and beauty moving in your mind and heart are real. You cannot see life, but you know you are alive. Point number 9: old age may be called the contemplation of the truths of God. From the highest standpoint, the joys of old age are greater than those of youth. Your mind is engaged in spiritual and mental athletics. Nature slows down your body so that you may have the opportunity to meditate on things divine. Point number 10: we do not count a man's years until he has nothing else to count. Your faith and conviction are not subject to decay. Point number 11: you are as young as you think you are. You are as strong as you think you are. You are as useful as you think you are. You are as young as your thoughts. Point number 12: your gray hair is an asset. You are not selling your gray hair. You are selling your talent, abilities, and wisdom, which you have garnered through the years.
Point number 13. Diets and exercises won't keep you young. As a man thinketh, so is he. Point number 14. Fear of old age can bring about physical and mental deterioration. The thing I greatly feared has come upon me. Point number 15. You grow old when you cease to dream and when you lose interest in life. You grow old if you're irritable, crotchety, petulant, and cantankerous. Fill your mind with the truth of God and radiate the sunshine of His love. This is youth. Point number 16. Look ahead, for at all times you're gazing into infinite life. Point number 17. Your retirement is a new venture. Take up new studies and new interest. You can now do the things you always wanted to do when you were so busy making a living. Give your attention to living life. Point number 18. Become a producer and not a prisoner of society. Don't hide your light under a bushel. Point number 19. The secret of youth is love, joy, inner peace, and laughter. In Him there is fullness of joy. In Him there is no darkness at all. Point number 20. You are needed. Some of the great philosophers, artists, scientists, writers, and other accomplished their greatest work after they were 80 years old. 21. The fruits of old age are love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Point number 22. You are the son of infinite life, which knows no end. You are a child of eternity. You are wonderful. Yeah, The so end. thank you, Meetu, but we'll continue reading. This book is Yeah. over technically. So इसमें जो 3-4 चीजें जो थी जो pointers में, the most productive years of your life are from 65 to 95-year-old. ये लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने. तो ये चीज हमको टेक बैक करनी है अपने साथ, that the productive years of your life are yet to come. जो हम सोचते हैं the end of life 65 to 95 को do we think are the most productive years of our life, but they actually are. जब हमको इस तरह का wisdom होता है, इस तरह का experience होता है और courage हो जाता है, you know, like तब तक कि हम कुछ नया कुछ अच्छा कर पाए. And then of course that इसमें लिखा हुआ है just diet and exercise don't work. Man is Bible का quote है that you know, whatever man is, so as he think it, so is he. So as he think it, so is he is written in the Bible. That means everything is in the mind. अगर आपने resigned attitude ले लिया कि अब मेरी उम्र हो रही है, अब मुझसे ये सब होता नहीं है, अब मैं ऐसे नहीं कर सकती, अब मैं थक जाती हूँ, अब ये बार बार बोल बोल के कि अब मैं थक जाती हूँ जल्दी, because of that आप थकते हो, not because body ऐसी हो गई है, you know. So it is, that's what it says, that आप बहुत अच्छी डाइट खा लो लेकिन दिमाग में पूरे टाइम एक फियर है, पूरे टाइम ये है that मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा यू नो लाइक इस तरह से ये सिचुएशन खराब हो जाती है, मेरी बार बार तबीयत खराब हो जाती है, तो वो वैसा ही बॉडी में होगा. या फियर के साथ जी रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब तो हम मतलब ऐसे कैसे काम होगा, और इतनी बीमारियां हो जाती हैं बिकॉज पता नहीं कहाँ से वो प्रोग्रामिंग है कि उम्र के मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिजीजेस हो जाती है. ऐसा होता नहीं है. बहुत सारे सुपर हेल्दी लोग भी हैं who are 70s and 80s, और इसमें हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पढ़े भी है. इसलिए it says that you know you are as young as you feel you are as strong as you feel you are. So these are the take backs. So इसीलिए कहते हैं the fruits of old age are live in joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. That is, don't be hyper all the time. And उम्र के बढ़ते बढ़ते become a little flexible in life. ओके ऐसा नहीं है जैसे कई बार होता है कि हमको 8 बजे ही खाना चाहिए, अब पूरा घर तूफान आ गया है बिल्कुल कि 8 बजे ही खाना. इट्स ओके अगर आप 8:30 पे ब्रेकफास्ट कर लोगे, ठीक है. तो थोड़ा सा रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में. मतलब डोंट बी वेरी रिजिड अबाउट थिंग्स बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैपेंस कि कुछ तरीके से कुछ तौर तरीके फिर सब लोग बोलते हैं अब इस एज में वो क्या चेंज करेंगे. क्यों, हम सब भी तो चेंज हो ही रहे हैं ना, समय के चलते चलते धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. Isn't it like, so थोड़ा सा हल्का सा बदलाव अगर कभी कभी इधर उधर थोड़ी एडजस्टमेंट. वैसे तो आजकल मॉम डैड्स बहुत ही कूल होते हैं, मतलब एंड दे आर बिकमिंग कूलर एंड कूलर मोर देन द यूथ.
So yeah, that is how it is, and enjoy that the coming years. और अपने दिमाग में रखो that as my age progresses, I will get better and better, stronger and stronger, healthier and healthier. ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में हमको हमेशा रखनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट. और डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड में बोलते हैं, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वंडरफुल बुक. सो यस, वी हैव एंजॉयड. थैंक यू डॉक्टर मर्फी, वेर एवर यू आर, फॉर राइटिंग दिस ब्यूटिफुल बुक, जिसकी वजह से हमको बहुत एम्पावरमेंट मिली है, और हमको अब यकीन होने लगा है कि हम जैसी दुनिया एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, हम वैसी बहुत आराम से क्रिएट कर पाएंगे. और फिर एक और बहुत अच्छी किताब हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और ये शक्ति गवैन ने लिखी हुई है. बहुत अच्छी किताब है, मैं पूरी 2-3 बार इसको पढ़ चुकी हूँ. और इसमें हमारा जो नेविल गॉडार्ड ने बहुत किताबें लिखी हैं. वॉरिस वॉटल्स ने लिखा है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में. और इस तरह से बहुत ग्रेट राइटर्स हैं, फॉर एवर दे हैव बीन राइटिंग. और ये सारे लोग बुजुर्ग लोग हैं जो किसी जमाने में हुआ करते थे, आज से 100 साल पहले तब लिखी हुई थी. थिंक एंड ग्रो रिच जब लिखी थी, तो इतनी पुरानी किताब है. ये सब इनटू बीइंग, अब्राहम हिक्स वगैरह की मेंटर है वो किताब. सो सब में एक कॉमन फैक्टर एक्सप्लेन किया हुआ था, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन. ठीक है, और इमेजिनेशन तो एक हमारी बाय डिफॉल्ट मोड पे चलती रहती है. जैसे हम कुछ सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है, अगर जैसे एक वर्ड हम इंडिपेंडेंस डे अगर किसी को दे दें, तो हमको फटाफट 3 कलर्स दिमाग में आ जाते हैं, है ना, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन. और वो जो बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, दैट मीन्स 24 आवर्स इन अ डे, तो वो हमको याद आ जाता है. फिर इंडिपेंडेंस डे से हमें एक झंडा लहराता हुआ, जो हमने बचपन से अटेंड किए हैं सेरेमनीज, है ना, फ्लैग अनफर्लिंग की, हमें वो याद आ जाती है. मुझे वो भी याद आता है कि हमको लड्डू मिलते थे खाने के लिए उसके बाद, मतलब जब फ्लैग होस्टिंग होता था उसके बाद से. इंडिपेंडेंस डे के नाम से स्पीचेस याद आती हैं, सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, तो शहीद भगत सिंह याद आते हैं. तो ये सारे ये हमारे इमेजिनेशन में एकदम से कम्स, फ्लैशेस इनटू आवर माइंड द मोमेंट वी थिंक ऑफ दैट वर्ड, है ना. सो इसी तरीके से ऑफिस, अगर सिर्फ एक वर्ड आपको दिया जाए ऑफिस, अब ऑफिस के नाम से आपको अपना ऑफिस नजर आएगा कि कौन से लोग हैं, कैसी बिल्डिंग है, कैसा आपका रूम है, किस जगह पे आप बैठते हो, कौन सी चेयर पे बैठते हो, कौन से रंग की चेयर है. तो इस तरह से ये डिफॉल्ट मोड में विजुअलाइजेशन, दिमाग में इमेजरीज हमेशा चल रही होती हैं, लेकिन उसको चैनलाइज करके उसको अपने हित में, अपनी तरफ फोकस करना, डायरेक्ट करना, ताकि आप अपनी उस दुनिया को क्रिएट कर पाओ जिस दुनिया में आप रहना चाहते हो. ठीक है, ये पावर देके हमें गॉड ने इस धरती पे भेजा है, लेकिन उसको वो ज्ञान जब तक हमारे पास आता है, लाइक वो थोड़ा सा, तब तक हम जिंदगी के बेसिक सीख जाते हैं. अब उस ज्ञान को लेके हम अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज करेंगे, उस मोल्ड में डालेंगे इमेजिनेशन को, जो हमारी जिंदगी का मोल्ड है, जैसे हमको जिंदगी बनानी है, ऐसा फ्यूचर हम क्रिएट करेंगे जैसा हम हमेशा से चाहते थे करना. ठीक है, सो इसीलिए इस किताब का नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. सो विजुअलाइजेशन तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन हम उसको डेलिबरेटली क्रिएट नहीं कर रहे थे, हम उसको आने दे रहे थे. जो थॉट्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं, कभी कभी अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कभी बुरे, कभी कभी बहुत बुरे, और वो आते रहे और हमारी जिंदगी को क्रिएट करते रहे. बट हमको ये आर्ट एंड साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन का ज्ञान नहीं था अभी तक, कि हमको ये नहीं पता था कि हम डेलिबरेटली अपने दिमाग में ऐसे सीन्स क्रिएट करें जो हम अपनी जिंदगी में क्रिएट फिजिकलिटी में करना चाहते हैं, जिसको हम रियल बनाना चाहते हैं. तो इसीलिए इस किताब का नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. मतलब आप क्रिएट करो डेलिबरेटली ऐसे इमेजरीज जो आपको अपनी जिंदगी में देखना है. जैसे आपको अपना बर्थडे बहुत पॉम्प एंड शो के साथ बनाना है, मतलब मनाना है, आपको हमेशा से ये था कि अभी तक आप बिल्कुल लॉस्ट थे अपने बर्थडेज पे, तो अब आप इमेजिन करो कि कितनी खुशियां, कितने सारे लोग आपकी बर्थडे में आए, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर कलरफुल, आपने कोई कलर थीम दी है. आप जैसा इमेजिन करोगे वो वैसा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि जिंदगी एक्चुअली इमेजिनेशन से चलती है. तो उस इमेजिनेशन की बागडोर जो अभी तक हमारे अपने हाथ में नहीं थी, नाउ वी आर गोइंग टू टेक स्टैंड्स विद इट एंड वी आर गोइंग टू होल्ड इट इन आवर हैंड वेरी टाइट. Okay, so we will not let our imagination run wild like a horse into the direction that we don't want to see. We don't want that to happen.
We want to imagine what we want to see and what we want to create in our life. Okay, no matter what it is. It could be an award, it could be your world travel, it could be so much of money coming to you, it could be success or whatever. So it is actually an art and science. It doesn't come very easily because दिमाग monkey mind बोलते हैं हम इसको. So we will now इसकी बागडोर हाथ में थाम के हम क्रिएट करेंगे ऐसी विजुअलाइजेशन की हमारी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल जो कर दे. ठीक है, तो ये पूरी किताब उसी के बारे में है. So I thought I brought it on the screen. Yeah. Okay, so we'll start with creative visualization. किताब का नाम है, मिस्टर शक्ति गवैन ने ये लिखी है और फर्स्ट एडिशन पुराना वाला था, हम सेकंड एडिशन पढ़ रहे हैं. उन्होंने कुछ चेंजेस इसमें और कर दिए थे, तो हम इंट्रोडक्शन टू सेकंड एडिशन से पढ़ेंगे. इसके बाद इन्होंने एक्नॉलेजमेंट्स दिए हैं, फिर उन्होंने एक छोटा सा नोट भी हमारे लिए लिखा है. ठीक है, सो हाँ मीतू, यू कैन प्लीज कंटिन्यू. Introduction to the second edition. It is hard for me to believe that it has been so many years since creative visualization was first published. At the time, I was 30 years old and just in the process of discovering my life's work. For a number of years, I had been an active seeker, dedicating myself to exploring Eastern philosophy and Western psychology in an attempt to discover the deeper meaning and purpose of my life. Certain ideas and techniques I had learned were, in fact, having a profound effect on my awareness and my way of living. I am the kind of person who, once I discover something meaningful, simply can't help telling everyone who is willing to listen. So I found myself beginning to counsel people and lead small groups and workshops, teaching the concept and exercises that were helping me solve my personal problems and expand my awareness. It occurred to me that it might be a good idea to write these things down in a little book that I could make available to my student. As I was writing the book, I experienced alternating waves of creative enthusiasm and self-doubt, thinking, who am I to write a book telling people how to find greater happiness and fulfillment in life? I am certainly no expert. My life is not perfect. My friend Mark Allen helped me get through the rough spots, encouraging me to stop worrying about it and just focus on my creative process. We decided to publish the book ourselves, even though we had very little knowledge of publishing and even less money. Somehow we managed to get the book out there in a few bookstores. The rest is history. People seem to love the book and it sold by word of mouth. Gradually, over the next few years, it became the bestseller and continues to be very popular to this day all over the world. I think one reason for its popularity is that it is short, simple, practical, and has techniques that readers can begin using immediately and effectively. It has been extremely satisfying to receive thousands of letters telling me how much this book has helped people with specific and sometimes serious problems. I am grateful to have been given the opportunity to contribute in this way. My work has blossomed right along with the book. For many years, I have been leading workshops all over the world, and I have written and published several other books. Creative visualization helped me find my path in life, just as it has helped others. The time has come for a revised edition. I have made relatively few changes, simply trying to clarify certain points, deepen certain concepts, and generally update it. If you're really familiar with the first edition, I hope you enjoy the changes. If this is your first experience with creative visualization, may it help you create all that your heart and soul desire. Shakti Gawain. Yeah, by the end of this book, you will become such a powerful imaginator that आप कोई भी चीज क्रिएट कर पाओगे. इसमें इतनी बढ़िया टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. जैसे अगर दिमाग बहुत परेशान है, एंजाइटी हो रही है, ये आपको बता देगा आपको कैसे बिहेव करना है.
ठीक है, उस वक्त क्या सोचना है। तो इतने सारे इसमें पाथ्स हमको दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स वेयर वी कैन create the kind of life that we have always, इसमें है ना, that your heart and soul has desired, इस तरह की जिंदगी आप क्रिएट कर सकते हो इस वाली किताब के साथ पे। इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड हमारे पास ये एडिटेड वाला वर्जन है, मैंने अनएडिटेड भी है मेरे पास पहले वाला, बट उसमें से काफी चेंजेस इन्होंने किए हैं टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल लोगों में वरी और फियर और वो सब थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, तो इन्होंने अलाइन कर दी वो बुक आजकल के जमाने के हिसाब से। सो वी हैव द एडिटेड वर्जन विच इज लाइक रियली ब्यूटीफुल। तो एक्नॉलेजमेंट्स, इनके लिए, ऑथर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो किनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, सो वी मस्ट ऑनर दैट एंड स्टडी दिस। हाँ जी। Acknowledgements. Thank you, Mac Allen and Dan Campbell, for your love and support in writing this book and in all other ways. Thank you, Rainbow Canyon, for your beautiful friendship. And special thanks to my mother, Elizabeth, for all your love, wisdom, and encouragement. I would also like to thank all the incredible teachers who have contributed so much to my life and happiness, as well as to the understanding that has been channeled into this book. Some of you I have known as gurus, some I have known as personal friends and lovers, and others of you have come to me in the form of books. To all of you, I send my love and deep appreciation. Last but not the least, I would like to acknowledge and thank my own inner guide who keeps showing me the way, reminding me how beautiful life really is, and who actually is responsible for writing this book. सो वी अगेन सी दैट इन्होंने ये किताब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ के उन वर्ड से लिखी है जो उन्होंने लिखा है ना, इनर गाइडेंस। So last but not the least, I would like to acknowledge and thank my own inner guide, that is my subconscious mind, who keeps showing me the way, reminding me how beautiful life really is, and who actually is responsible for writing this book. सो जी, जितने भी ग्रेट राइटर्स है और जिनकी किताबें उन्होंने बहुत मार्क किया है जिंदगी में, दुनिया में, they have all channelized the spirits, so they have channelized the subconscious mind. वो उनका कॉन्शियस माइंड से ये किताब नहीं लिखी गई है, इसीलिए इट इज सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज चेंज सो मेनी लाइव्स। अब शक्ति गवैन का लेटर है हम सब के लिए। हाँ जी। A letter to my readers. Dear friends, I decided to write this book because it seemed like the best way I could think of to share with others the many wonderful things I have learned, which have so deepened and expanded my experience and enjoyment of life. I do not consider myself by any means an expert on the art of creative visualization. I am a student of the subject, and the more I study and use creative visualization myself, the more I discover how vast and deep its potential is. Truly, it is infinitely creative as your own imagination. This book is meant as an introduction and workbook for learning and using creative visualization. Very little of the material is original to me. It is a synthesis of the most practical and useful ideas and techniques that I have learned in my personal study. My sources are many. I have included at the end a list of recommended resources that I think you will find interesting and helpful. This book contains many different techniques. You will probably find that it works best not to try to absorb them all at once, but more gradually. I suggest that you read the book slowly, trying some of the exercises as you go along and giving yourself the chance to absorb them deeply. Or you might want to read it once through, then reread it more slowly. This book is my gift to you in love. May it be a blessing to you. May it help you bring more and more joy, satisfaction, and beauty into your life. May it nurture the light that is as shining within you. Enjoy. Love, Shakti. Yeah, such a beautiful letter written by Shakti Gawain for us. So इन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ मेरी क्रिएशन नहीं है, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स और उनकी किताबों को कंपाइल करके ये बुक बनाई है। सो सोचो कि हमको हर चीज का जूस मिल रहा है इस किताब में। मतलब वही अगर हम 50 किताबें पढ़ते अलग अलग टाइम में, तो वो टाइम सेविंग टेक्निक
आपको ये वाली बुक मिल गई है, तो इसमें सारी जितनी भी नेविल गॉडार्ड की टीचिंग्स है, मैं उनके बारे में बताती रहती हूँ, बोरिस वॉटल्स की टीचिंग्स, वो सब इसमें है। उन्होंने जब भी किताब लिखी तो ये उसका अमेलगमेशन है, उसका एक्चुअली ये जूस है। और इसमें हमको और असाइनमेंट्स थोड़े आ जाएंगे अब, जो तो ऑलरेडी मैजिक बुक के चल ही रहे, वो तो करने ही पड़ेंगे, बट इसमें भी हमको टेक्निक्स एंड टूल्स बताई हैं, और वो वर्कबुक के फॉर्म में वो हमको करने पड़ेंगे. So, but then to create the most beautiful life and to also make this world a beautiful place to live in. So we all can make a difference by doing all these techniques जो इसमें है. So ये जो इनकी ब्लेसिंग्स हमको मिली है, इन्होंने पहले से ही इस किताब को, कि जो इस किताब को पढ़ेगा उनके लिए ये किताब ब्लेसिंग होगी. ठीक है, उनकी जिंदगी में मोर एंड मोर जॉय आएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा, एंड वो ब्यूटी ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर पाएंगे, और वो उस लाइट, द लाइट दैट शाइन्स विद इन अस, उसको लेके आएंगे. तो ये उन्होंने ब्लेस करके इस किताब को रीडर्स को दी है. तो विल गो, आई थिंक इसके बाद फर्स्ट चैप्टर ही है. So this book is dedicated to you, that is हम में से हर एक जना जो पढ़ रहा है उनको लिखी है उन्होंने. So ये बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 में है. अभी हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे, which are the basics of creative visualization. Yeah, please read this. Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart truly desires must come to you. It is so beautiful, isn't it? Every moment of your life is infinitely creative. मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप $1 million क्रिएट कर सकते हो, बट ब्लॉकेजेस का है, दिल के अंदर है ना? And the universe is endlessly bountiful, मतलब very abundant. You know, it can give anything. मतलब यूनिवर्स के लिए ड्रॉप इन द ओशन भी नहीं होता है जो हम मांगते हैं. Just put forth a clear enough request. So आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, मुझे 1 साल बाद कैसा दिखना है, मुझे 1 महीने के बाद कैसा दिखना है, कैसा होना है, वेट वाइज कैसा होना है, किस तरह के कपड़े मैंने पहने हुए हैं, किस तरह के घर में मैं रहती हूँ, किस तरह का एनवायरमेंट है घर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर इट इज. Okay, so put forth a clear enough request to the universe, that is, and everything your heart truly desires must come to you. So this is how this book starts. Okay. Hanji. What is creative visualization? Creative visualization is the technique of using your imagination to create what you want in your life. There is nothing at all new, strange, or unusual about creative visualization. You are already using it every day, every minute. In fact, it is your natural power of imagination, the basic creative energy of the universe, which you are constantly, whether or not you are aware of it. So इसमें creative visualization की definition है. Creative visualization is a technique of using your imagination to create what you want in your life. अगर हमको super healthy body चाहिए तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, बिकॉज इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है. सो दैट्स व्हाट इट सेज हियर, दैट इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है कि इमेजिनेशन से कैसे कोई जिंदगी बदल सकता है, बट यस इट डज. रिपीटेड इमेजिनेशन से चीजें चेंज होती है. मतलब इमेजिनेशन में रेपिटेशन आती है तभी वो सबकॉन्शियस, और इमेजिनेशन की वजह से, बिकॉज उसमें लोग हिल रहे हैं, आवाजें सुन रहे हो, कलर्स दिख रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन में ये सारी चीजें होती है, तो वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बना लेता है. तो रिपीटेड इमेजिनेशन से डेफिनेटली सिचुएशन चेंजेस. एंड इसमें लिखा हुआ है कि हमको पता नहीं है, अब इसमें शक्ति का मैंने लिखा है, यू ऑलरेडी यूजिंग इट every day you're imagining things, every day you're thinking, oh god मैं पहुंच जाऊंगी, मैं मेरी उससे लड़ाई हो गई, उसका बिल गया, oh god आज वो ऑफिस आने वाली है, मुझे बिल्कुल उसके साथ बात नहीं करनी, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे. तो ये भी इमेजिनेशन में हम लगातार अपने थॉट्स और इमेजिनेशन में सोच रहे होते हैं, बट हमको पता नहीं है कि हम उसकी वजह से रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ये हमको पता नहीं है. तो इमेजिनेशन तो शुरू से वर्क कर रही थी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू से वर्क कर रही थी, ठीक है, बट हमको नहीं पता था कि हमको किस तरह से उसको चैनलाइज करना है.
सो इसीलिए लिखा हुआ है दैट ये आपकी नेचुरल पावर जो है इमेजिनेशन की, द बेसिक क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो इमेजिनेशन की दूसरी डेफिनेशन इन्होंने दी है, इट इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आप अच्छा इमेजिन कर रहे हो तो अच्छा क्रिएट कर रहे हो, बुरा इमेजिन कर रहे हो तो बुरा क्रिएट कर रहे हो, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए अब हम इसको इमेजिनेशन को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस बुक, यू नो। सो हाँ जी। In the past, many of us have used a power of creative visualization in a relatively unconscious way because of our own deep seated negative concept about life. We have automatically and unconsciously expected and imagined lack, limitation, difficulties, and problem to be a lot in life to one degree or another. That is what we have created for ourselves. या एक्चुअली हम रिस्पॉन्सिबल है ना, हमने आज भी यही पढ़ा था दूसरी बुक में भी, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सारी चीजें बसी हुई हैं, यू नो, दैट लैक, लिमिटेशन, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन हमारे आंखों के सामने वो चीजें नहीं हो पाती है जो हम इमेजिन करते हैं। सो दैट ये सब क्रिएट हो रहा था हमारी जिंदगी में। हाँ जी। This book is about learning to use your natural creative imagination in a more and more conscious way as a technique to create what you truly want: love, fulfillment, enjoyment, satisfying relationship, rewarding work, self expression, health, beauty, prosperity, inner peace, and harmony. Whatever your heart desires. The use of creative visualization gives us a key to tap into the natural goodness and bounty of life. Yeah, so we'll be able to read only so much today. Thank you, मीतू। मन कर रहा है कि किताब पढ़ते जाएं। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमेशा थोड़ी थोड़ी पढ़ के समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, है ना। टू मच अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं व्हेन वी आर नॉट इवन रेडी फॉर इट, सो इट्स ओके। हमने इसका मतलब समझ लिया है। अब इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें है दैट अब हम कॉन्शियस रहेंगे कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। सो अब हम अपने कॉन्शियसली अब हम इमेजिन करेंगे उन चीजों के बारे में जो चीजें हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, दैट वी ट्रूली वांट। लव, एवरीबडी वांट्स अ लॉट ऑफ लव इन लाइफ, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स विल कम व्हेन द डिजायर्स, दैट फीलिंग ऑफ वाओ आई हैव सो मच। एंजॉयमेंट, satisfying relationships, rewarding work, तो आपने काम किया, अभी तक एक्नॉलेज नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है कितना भी कर लो किसी को दिखता ही नहीं है, मैं इतना काम, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे चली जाती है। बट नहीं, अब आपका काम रिवॉर्ड होगा, क्योंकि हम क्रिएट करेंगे वो इमेजिनेशन में। सेल्फ एक्सप्रेशन, हेल्थ, हेल्थ में जब भी चैलेंजेस हो रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को क्रिएट करेंगे अब से, है ना। ब्यूटी, प्रोस्पेरिटी, inner peace and harmony, whatever your heart desires you can create in your life by channelizing your imagination in that direction. Okay, so this is what it is. So now we will see that ये जो creative visualization है, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी गुडनेस और अबंडेंस लेके आएगा, जिस भी डायरेक्शन में हमको चाहिए। Thank you so much, Meetu. Thank you for reading. And we'll start from imagination is the ability. अभी तो introduction chapter चल रहा है। अभी जो पार्ट 1 ऑफ द बुक है उसमें सारे हमारे बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज अब हम अभी से कर सकते हैं, इज टू फोकस ऑन इमेजिनिंग ओनली द थिंग्स दैट वी वांट टू सी। वी विल नॉट इमेजिन एनीथिंग दैट वी डोंट वांट टू सी। तो आगे हमारे पास वर्कशीट्स आएंगी, असाइनमेंट्स आएंगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल करना जरूरी है कि डोंट लेट इट गो इन लाइक द वाइल्ड हॉर्सेस, होल्ड इट इन योर हैंड्स, ठीक है। उस साइकिल का जो हैंडल होता है टाइट पकड़ के रखो, उसको मत जाने दो इधर उधर डायरेक्शन में, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। सो इसलिए अब हम क्रिएटिव फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे डेलिबरेटली. So we will get to know a lot about that. So very interesting book this is. So thank you so much. Thank you, Raman and Meetu, for reading. Thank you. Anyone wants to share or add anything? Starting such a wonderful book. I can't even thank you. I don't have words to say that, every word which was read today, it was bringing so much of, joy. ऐसा लग रहा था कि my God, such a beautiful book. Thank you for choosing this book, ma'am, really.
Yeah, this is beautiful. It After this feels like also a I've got new another book journey. that we are. हाँ जी, रितु का हैंड रेज्ड है क्योंकि आज वो पोयम पढ़ने वाली है. पढ़ो. यस छोटी सी आज छोटी सी लिखी है मैंने. हाँ, मुझे पता था कि इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आपने जरूर पोयम लिखी होगी. यस मैम. मैम मुझे भी ना बड़ा मजा आ रहा है जैसे आपने कल लिखा ना कि ये वाली बुक स्टार्ट होने वाली है तो मेरे तो इमेजिनेशन के घोड़े वैसे ही बहुत तेज भागते हैं. हाँ, तुम्हारे तो जो पोएट और पेंटर्स होते हैं ना उनके इमेजिनेशन के घोड़े ही होते हैं. यस मैम. मतलब मैं पढ़ते ही खुश हो गई थी. मैंने कहा अब और मजा आएगा मुझे अब. दीप्ति मैम ने सिखाई है हमें आजादी अपने मन की कहने की. दीप्ति मैम ने सिखाई है हमें आजादी अपने मन की सुनने की. दीप्ति मैम ने सिखाई है हमें आजादी अपने मन की करने की. दीप्ति मैम ने दी है हमें आजादी सपने देखने की. दीप्ति मैम ने दी है हमें आजादी आकाश में उड़ने की. आउट लाउड यूनिवर्स से बातें करने की. अपने लिए सोचने की. अपने आप को ही समझने की. अपनी राह चुनने की. अपनी मंजिलें पाने की. आत्मनिर्भर बनने की. अपने भीतर झांकने की. अपने भीतर की बातें मानने की. यूनिवर्स से अपनी बातें मनवाने की. दीप्ति मैम ने दी है हमें आजादी हम सभी को एक स्त्री होते हुए भी खुद से अथाह प्रेम करने की. दीप्ति मैम इस आजादी की जो नई बताई है आपने हम सभी को प्रक्रिया. इस नूतन आजादी के लिए आपका शुक्रिया 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 शुक्रिया. सो स्वीट. बट मैंने कहाँ बताया आपको आजादी, आपने तो खुद कॉन्जर करी है अपने लिए. नहीं नहीं, you मैम are अब the खुद tool. से देखो सबसे सब यही बोलेंगे कि आपने हमें बहुत कुछ ये चीजें सिखाई हैं मैम. अच्छा. Yes. मैंने तो नहीं सिखाई है. Beautiful, Ritu. थैंक यू. Very nice. ब्यूटीफुल, सच नाइस. आई मीन nice. लाइक कोई भी शब्दों को आप इतने अच्छे से पिरो के उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हो. अमेजिंग. कितना अच्छा फ्रीडम, मतलब कितना अच्छा बताया मैम, जिसने सही बोला. ये सब आपने रियल सिखाया. फ्रीडम का मतलब. बुक्स तो मैम Really हमेशा थी हमारे to पास, like बट what यू you हैव do. पुट दिस फॉर अस. बुक्स तो हमेशा से थी वहाँ सब जगह, बट you have taught us to listen to our mind, to listen to our heart, and do whatever we want to do. Yeah, Thank you. thank you. Thank you, Ritu. We have Sunaina. You want to Totally share something? God bless you, Ritu. Agree. जल्दी से पूरी तरह से फुल एक्टिव रिवाइव अपने उस मोड में. वैसे आप उस मोड से भी ज्यादा होगी. Yeah. Dipti, see, this is a beautiful park, Central Park. Yeah. हाँ, okay. Beautiful celebration going on. अच्छा, for the Independence Day. Yeah. It's a beautiful park. सारे elements Very- नजर आ रहे हैं वहाँ पे. Yes, and such a big flag. Yeah, huge Wow. flag. Thank And you so singing much. यहाँ होता है, singing always, every day. हाँ? Song का. अरे Every वाह. day, yeah. मोदी जी भी Every Sunday, स्क्रीन sorry. पे आ गए हैं. मोदी जी भी स्क्रीन पे आ गए हैं. गांधी जी को नमन कर चुके हैं. हाँ. So, when I go to Jaipur, I stay at a hotel Clark Samir. Clark Samir ही है ना उसका नाम, जो सी स्कीम के पास है. Yes. There, so in the morning, I'm in a habit of going out into the nature and spending my little time there. So all the hotels always have a gym, but then I go and walk. और उसमें पार्क, एक बहुत बड़ा सा पार्क है. Since you are in Jaipur, I'm telling you, तो वहां पे सारे senior citizens, they all come there and they all sing वो पुराने हिंदी वाले गाने. और वो एक स्पीकर लेके आते हैं, उस पे वो चलते रहते हैं और वो साथ साथ जोर जोर से मजे से गाते हैं. So मुझे इतना अच्छा लगता है. मतलब ऐसे 2 ही दिन के लिए जा पाती हूँ जयपुर. एंड यू नो लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल साइट टू एक्चुअली सी. तो पिछली बार मैं भी चली गई थी उनके साथ. मैंने कहा मुझे I mean, that is Jawahar Kala Kendra, I think. जवाहर कला केंद्र वाली वो रोड है. इट्स लाइक क्लार्क सामने. नहीं, जवाहर सर्कल है वो सर्कल जवाहर सर्कल है. इट्स अच्छा, अ वेरी बिग okay. सर्कल. अच्छा, Yeah, that it's called circle is that. that. Okay. Yeah. So isn't it अभी so तो और beautiful? डेवलप करके दिस टाइम यू विल कम एंड सी इट इज बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं उसको. अच्छा. जवाहर सर्कल को. या ब्यूटीफुल. जल्दी प्रोग्राम बनाओ. हाँ. जब ऑफिस ले जाता है तो वो सिटी बुलाती है मुझको. अलग अलग बुलाती है. So it's like एंड that. यहाँ एवरीडे योगा होता है. एवरीडे हाँ, एवरीडे योगा होता है. मैंने भी किया था या उनके साथ.
मैंने भी उन Even अंकल in आंटी this से बोला garden. मुझे भी आपके साथ ताली बजानी है, गाने गाना है, मैं भी बैठ जाऊं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं अट्रैक्ट हो गई आपकी तरफ। सो इट वाज सो मच फन। हाँ जी सुनैना, Yes. यू वांट टू शेयर? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर इफ यू डोंट माइंड, रितु जो पोएम बोल रही थी ना, तो एक दो लाइन मैं भी बहुत इंस्टेंट बना लेती हूँ पोएम्स। तो दो लाइनें हम सबकी तरफ से तुम्हारे लिए। ओके। सुबह की दिलों को होती नहीं है तृप्ति, जब तक हम सबको दिखती नहीं है दीप्ति। सो यस स्वीट। यस यस। ये जस्ट मैं ऐसे इंस्टेंट वो डालते हैं ना टीजर से, ये मुझे आते रहते हैं। हाँ, तो एंड ये जो माय छोटी छोटी पोएम्स होते हैं ना, इनको जापान में हाइकू बोलते हैं, HAIKU। तो एच जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स हैं जैसे आप हैं, तो वो अपनी किताबों के बीच में ना ये हाइकू डाल देते हैं। सो इसमें क्योंकि हम बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करते हैं, तो सेंसे टोडा और सेंसे केडा बड़े हाइकूज लिखते थे, बस चार चार लाइनों के। तो इस बार जो संडे को गोशो भी था, तो उसमें वो शुरू ही हाइकू से हुआ था। मतलब वो 4 लाइनों से, और मैंने ही वो गोशो लिया था। तो आई मुझे बड़ा रियली मजा आ रहा था एंजॉय। सबको एक्सप्लेन करने में वो 4 लाइनें। तो आपने You ये are so हाइकू लिखा है। addicting, Dipti. You're so addicting. So this is a haiku. Thank you, Sunaina, for your debut poem writing and sharing to us. नहीं नहीं, तुम जब बोले, मैं मतलब इट्स लाइक मेरे को बचपन से तुकबंदी बोलते थे ना हम इसको पहले। तो हाँ, आई यूज, मी एंड माय ब्रदर इन लॉ, ही इज माय क्लासमेट, तो हम लोग गेम खेलते थे। वो मुझे एक वर्ड देता था, तुरंत लाइक विद इन लाइक 1 मिनट से भी कम टाइम में तुम कोई वर्ड दो, कभी ये भी गेम खेलेंगे, बहुत मजा आता है। अरे तो बहुत अच्छा है। हमको सुना, लिखो लिखो ऐसे छोटे छोटे पोएम्स हमको हाँ, सुनाते रहो। मुझे, हमें नहीं भी, नहीं, ऋतु भी सुनाती है, बड़ा मजा आता है। इतना दिल से लिखा हुआ होता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो वर्ड्स मिलते हैं। सो उसके इट्स तो बहुत ग्रेट फुल ऑफ इमोशंस पुटिंग होता है ना। टुगेदर इट इन द फॉर्म ऑफ पोएम। तो थैंक यू जैसे सो फॉर प्रिया शेयरिंग। प्रिया नेहरा है, जैसे तो हाँ। प्रिया नेहरा का है कि सबके दिलों पे छा गया है एक पहरा, उसका नाम है प्रिया नेहरा। ओ प्रिया नेहरा तो वैसे ही कमाल है। तभी तो मैंने यही बोला, तो आपको हाँ, जिसको कुछ भी भी बोलती बनवाना है है बस मुझे यूट्यूब पे बता ऐसा देना। मतलब बोलती हो तुम्हारी वजह से हुआ है, कुछ भी बोलती है यूट्यूब पे तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही पोस्ट करती हो, तुम ही मैनेज करती हो, सब कुछ यही करती है। सो शी या इज तो इससे कोई इनक्रेडिबल। बात नहीं, मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, मैं रोज एक एक टीजर डाल दूंगी। तो हाँ। माय शेयरिंग इज दैट कि जैसे मैनिफेस्टेशन की बात हो रही थी, तो एक लाइक हमारे इंडिया में दो मेजरली पॉडकास्ट है, जैसे एक रणवीर अलावादी, जिसका आपने सुना होगा, रणवीर अलावादी जो है, और एक है रियल हिट। तो मैंने दोनों के लिए मैनिफेस्ट किया था बिफोर कमिंग। 3rd of August को मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो रियल हिट दे हैव टेकन, दे वो मेरा 24 आवर्स में मैनिफेस्ट हो गया। एंड मेरा बहुत जल्दी रियल हिट पे इंटरव्यू आने वाला है। एंड इट्स अ वेरी बिग बिग प्लेटफॉर्म। तो uh, जब भी आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट मेरी शेयरिंग यही थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट पे आना। एंड आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड इन 24 आवर्स। सो 3rd को मैंने इसको, किसी का मैंने देखा, एंड आई थॉट कि काश जाने से पहले मेरा कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, लाइक मैं इंडिया से जा रही हूँ। एंड विद इन 24 आवर्स मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई आ गया कि यस, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। एंड दे हैव लाइक टॉक्ड अबाउट माई द होल जर्नी। इट इज बेसिकली अबाउट माई मेंटल जर्नी, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट। उन्होंने काफी इंसाइट्स शेयर किए। इट्स ए 50 मिनट्स इंटरव्यू। तो वो जब भी आएगा मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूंगी। एंड यस, बिलीव, आप प्लीज बिलीव कीजिए। मतलब मेरे साथ एक, मुझे पता नहीं मैंने इस प्रैक्टिसेस के थ्रू आया या क्या, मेरे को ना कोई लाइक साथ में कोई पैरेलल थॉट नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब मुझे आता ही नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। अगर घर का है तो मुझे आता ही नहीं। जस्ट लाइक मैं आई कीप ऑन डूइंग, जैसे कहते हैं ना, वो कर्म करते जाओ और फिर छोड़ते जाओ, सरेंडर करते जाओ। तो मेरा काम है विजुअलाइजेशन करना, और फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो ये भी एक हमने सीखा था ना दीप्ति की, लाइक एक टाइम के बाद यू हैव टू लीव इट टू द यूनिवर्स। सो वो कन्विक्शन, इसलिए मेरे से जब भी कोई पूछता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन प्रैक्टिसेस में ना फेथ जरूर रखिए, कि हम जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा होगा ही होगा। तो कोई अपोजिंग फोर्स पैरेलल आने ही मत दीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे मेरी बहुत सारी चीजों में टाइम भी बहुत लगा है, बट कई कई बहुत जल्दी भी हुई हैं।
सो ये तो मेरा ज्ञान हो गया, बट मेरी शेयरिंग यही थी कि रियल No, no, हिट that's पे very मेरा good. God will मतलब take you बहुत to the टच। charam seema of the sapaltas that you can ever थैंक think यू of. सो मच, And it थैंक will यू सो only get मच। better and better. अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, Sunera. Enjoy या that path. पक्का पक्का, Anji, मैंने तो Bharti सो wants to सैड। share something. The hand is raised. Yeah. Anji. Good morning, everyone, and happy Independence Day. And my sharing is बहुत फनी सा लग सकता है, बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन जब मेरे से लोग पूछते हैं ना कि डिड यू इम्प्रोवाइज मनी वाइज, तो मैं कहती हूँ मैजिक छोटे से शुरू होता है। और जैसे मॉर्निंग में मैं पहले हमेशा दूध रख के भूल जाती थी, एंड इट ऑलवेज कम डाउन ऑल द टाइम। और आज मैंने सेशन शुरू किया और मैंने रखा, और पता नहीं मतलब उसके होने से पहले ही मुझे इतनी जोर से आवाज है। जनरली मिल्क बॉईल होता है तब वो आवाज आती है ना, एकदम की हो रहा है और फैल जाता है फिर आती है। आज पता नहीं कैसे मैजिकली वो पहले ही आ गई और वो एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। इट हैपेंड फर्स्ट टाइम विद मी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ऐसा मैजिक भी होता है। Then there is one of my student as a student he entered in my life, and now he's close friend. Yash Vaidya, he has joined today. So I never thought I'll be able to make him join these sessions. मतलब वो बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, बट youngsters basically don't believe much in all to that. And I don't know how suddenly something happened in his life. He called me and I said, just do that once. तो yesterday he called me कि मैंने मैजिक बुक पढ़ा है, तो I said पढ़ने से नहीं होगा, energies matter. So he said वर्चुअल में कहाँ एनर्जी? मैंने कहा हम भी फोन पे बात कर रहे हैं, we haven't met for years, we still connect for all the ups and downs. So एनर्जी तो है वर्चुअल में भी, if you'll join there, जो एक साथ सब करते हैं तो जो एनर्जीज आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। when you speak, वही बुक हम खुद पढ़ रहे हैं बट आप बोलते हो तो वो एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग योर एक्सप्लेनेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो ही इज हियर, एंड उसने ज्वाइन करने के 10 मिनट के अंदर ही मुझे मैसेज कर दिया था, थैंक यू दैट आई एम हियर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई वाज लाइक So I okay, missed so his name. Is that, he still there? yes, he's still there, I guess. Okay, what's Yes, his are name? you there? Please unmute. Yes, Vaidya. हाँ, अच्छा, तो उनको लग रहा होगा पहले ही दिन आ गए और हमको सबके सामने बोलने को बोल दिया। But no, It's okay, like yeah, it's a but then magic कि I'm able to bring the people, those people in this journey, those I never, even I don't thought कि ये लोग कभी कर पाएंगे ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस जर्नी में आ रहे हैं और बहुत चेंज ला रहे हैं अपने लाइफ में, तो मुझे इतना खुशी होती है रोज की, वाओ आज you've कुछ introduced और अच्छा many हुआ। people. You have. So when their life change, it's like okay, मेरी life change हो रही है, I feel in that way. So it's a great blessing. बहुत सारी blessings हैं, cause of you, cause of Priya, every time, cause of all. I get highly inspired by Ritu all the time. Whenever I go for physiotherapy, I'm like, अरे यार कीमो और फिजियो बहुत डिफरेंस है, ये तो just 2 मिनट में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। So I'm super happy and extremely thank you to all of you. मोहित जी की poems मैं हर बार बोल नहीं पाती because of I'm in school and all the time out. But yes, सब आप सबकी एक एक चीज मैं ग्रुप में पढ़ती हूँ and I really love each and everything. This is the only single group where I read all the messages. Otherwise, मैं official group There's की so भी much of I spirit and quit. energy in this group. Yeah. Yes, so thank you for spreading energies all around, the positive energies. Everyone of us need this. And thank you so In much fact, for I giving also us get the a lot of freedom of energy, so changing it's an our energy thoughts. exchange. Yeah, so that's what I love about this, that we exchange positive energy even without not talking, not interacting, then too we get energy. और ऐसे बहुत छोटे छोटे मैजिक्स डेली दिन में 3-4 कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है wow, it was magic. It happened. Yeah, So so thank you so much, thank you. Bharti. I've heard your name from so many people और आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं कि भारती मैम ने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, भारती मैम ने वैसे बोला. So you are spreading a lot of joy and happiness in everyone's life. So thank you for I'm it, and just thank you being part of putting, this group also. Thank you thank so you. much. I'm just part of this universe and I'm playing my role for which I am born. Like I was on ventilator for almost 2.5 months and then I took this life again. So
I'm just spreading happiness, nothing else. और ग्रुप में तो वो And प्रिया नेहरा की मेहर है बस हाँ, प्रिया नेहरा Priya की मेहर है, सब संभालती रहती she है। always, मुझे she कुछ ये भी always, मुझे बताया connect जाता है with रोज him सुबह विदाउट फेल। आज ये वाली किताब पढ़ रहे हैं, ये वाली किताब पढ़ रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है, आज किसी ने यूट्यूब पे ऐसा मैसेज किया, आज उन्होंने ज्वाइन किया, आज ये। सो दैट इज इनकी मेहर है जो है। Yeah, means the moment if you text her, she'll respond immediately. हाँ और उन्होंने मुझे जो कंजक्टिवाइटिस के लिए दिए थे, my son don't believe in all that, उसका अभी तक भी ठीक नहीं हो रहा है from last 10 days, and मेरा 1.5 day में ही I started working. So thank you, Priya. Yeah. I also told on message. एंड So इट्स सो इंस्पायरिंग ईच अदर। मतलब मीना की बेटी ने एक बार लिखा था, शनाया ने, रिमेम्बर शी हैड पोस्टेड अ स्मॉल वीडियो, लिखा था थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माय हेल्थ, बिकॉज उसका कुछ हेल्थ का इशू हो रहा था। सो वो छोटी सी बच्ची, मतलब जस्ट टाइनी एंड सो स्वीट एंड यू नो लाइक, वो मेरे दिमाग में था। तो कल से मेरा ऐसा ही दिन चल रहा है थोड़ा हेल्थ वाइज। तो मैंने सुबह एक क्रोसिन ली, फिर मैंने एक एंटीबायोटिक ली, फिर उसके बाद ऑफिस जाना जरूरी था, फिर मैंने शाम को एक और क्रोसिन लेनी पड़ी मुझे, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आई एम ऑन मेडिकेशन। फिर मेरे आईज में कुछ ब्रेक डाउन हो गया था, तो जब मैं ऑफिस से जल्दी आ गई थी क्योंकि आई कुड नॉट सिट एनी मोर दैट, एंड आई वॉज होम बाय 5:30 5:45, और उसके बाद आके वो मुझे शनाया वाला याद था, मैंने चुपचाप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकाला, thank you for my perfect health, thank you for my perfect health. So I wrote that 100 times, and then here I am. So it's like that. So we all inspire each other, all that little sharing. Imagine if Meena had not shared that, of course, like I would have written for sure, but you know, like these kind of things always stay in your heart, and that little girl inspired my life yesterday. और मैं वैसे ही जैसे वो बोल बोल के ना, मतलब मीना ने वीडियो पोस्ट किया था, तो वो वीडियो पोस्ट किया था तो शनाया ना बोल बोल के लिख रही थी थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, तो मैंने भी बोल बोल के 100 लिखे वो, exactly like that. Thank you for my perfect health, thank you for my perfect health. It was like I would that. like to add here, in 2021, when I came out from COVID, 99% lungs infection and all that, I got I started heart treatment, liver, lungs, and whatnot. And then I started doing gratitude. I started doing practice of access consciousness and the magic both together. And in 22, and now in 23, I even don't take any vitamin. मैं सोचती हूँ कभी कभी कि I should take at least few vitamins, but I forgot. And I'm happy with that. I don't take single medicine for anything. And I rock on for the entire day. My schedule is like working from morning till late night, but I never get tired. I enjoy even the last session of 10 o'clock. And my students are like, कहाँ से energy लाते हो 10 बजे भी इतने हंस के बाय बोलने की? So this is all magic actually. That Yeah. you know, the one who was like doctors ने बोल दिया था you will not survive without medicines now ever. The one who was taking heart medicines, and I'm like अरे यार इतना प्यारे दिल में दवाइयों की और दर्द की जगह ही नहीं है. Yeah. So this is how I enjoy. So thank you so much everyone, and Thank I you, and inspire thank a you lot for by sharing Sunaina like this, also. you know, this is I very feel like okay, inspiring. one of the day I'll become the best author like Sunaina. I have written till now only one book, but yes, I'll write many and more, and I follow her on Insta and I all the time. Okay, like ऐसे मेरे भी Please tell होंगे. the name, Bharti, the name of the book. Love, Life and You. It's about Oh, relationship. wow. What is that? Come अच्छा again? Love, Life and You. It's available on Oh, Amazon. wow. It's available on Amazon or every store? It's on every store. Okay, okay. By your I'll name. share the link in group. Yeah, please do. Wow. Thank you Maybe so read by much millions everyone, and and love millions you of all. people. Love you all. Have a beautiful Amazing. day. Thank you so much, Bharti, and God bless you with power, success, money, abundance, happiness, health, goodwill, peace, everything that you want to. Thank you. You can add to it. And Deepti, thanks to the girl yesterday जिसने remind किया था कि freedom fighters लोग के लिए लिखने के लिए. Blessings. Yesterday someone told me, I forgot the name. क्या रिमाइंड I कर रहा forgot था? the name. कि freedom fighters लोग के लिए blessings लिखने. हाँ हाँ. That I did yesterday morning.
Poonam That had was done, good. yes. Yeah, So yeah, writing yeah. blessings for the freedom of the country, in praise of our country, anything that we can write, you know, for all those people who've given up their lives so that we can live like this. So yeah, definitely. Yeah. And sometimes, Deepti ma'am, you should spotlight Priya Nehra's smile as right now she is doing. मतलब देखते रहो स्कूल जाना लेट हो रहा है बट नहीं जाना उसको देखते रहो प्रिया कितना नेहरा प्यार तुम्हारा दिन है she's smiling. टुडे द डे इज योर्स। प्रिया नेहरा की मेहर बोलती हूँ मैं हमेशा, इनकी मेहर है बस। सब कुछ ये शांति से करती रहती है, ये ग्रुप चली उनकी वजह से रहा है, सूत्रधार। So it's like that. Yeah, Poonam, your hand is raised. Yes, ma'am, I wanted to mute share me. in the evening classes. Kavya shared that you know she writes 108 blessings that thank you for everything I had. So that also inspired me so much. So I also write, you know, मैं 108 तो नहीं वो लिखती पर मैं 10 blessings जरूर लिखती हूँ. Thank you for everything I have. So the children have so much of energy and so much to learn from each other. Not even children, like from each other also. Like today when you shared, I also remembered that, you know, how I get energy from listening to anyone, even if it's a child, they teach you so much and you always remember it. Yeah, that's really amazing. Thank you for everything I have. तो हम कभी करते नहीं है हमेशा। मैं करने लगी हूँ after listening to Kavya. That's beautiful. Thank you for sharing. Always there's so much to learn from the kids. So Yes. bye then, we'll get going. It is 7:25. Okay, thank you Yes. so much. Bye And bye. see you all tomorrow. Thank and you wish so you much, very, ma'am. very happy Independence Day. Thank you. And Thank nice you. derived that Same we to you, have. ma'am. Thank Bye-bye. you. Bye Bye bye, bye. ma'am. Thanks Bye to all bye. of you.